Namaskar, welcome to the session. We have been discussing public administration related matters since last three classes रे हमें विभिन्न प्रकार कथा देखुचे लास्ट क्लास गोटे देइथिली मु पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी ऊपर देइथिली केमती गोटे सिस्टम आसे तो आज गोटे क्लास रे मु फोकस नबाकू चाहूची इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए separate discipline or separate subject. Evolution of public administration as a separate discipline. Public administration is the only subject which deals with different things. If you talk about sociology, sociology deals with society, psychology deals with human behavior, physics deals with matter, biology deals with flora and fauna. But what does public administration deal with? If we ask a question, यदि आम क्या पचार कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन डील करे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विथ एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन देयरफॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए डिफरेंट सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग एंड वेरी comprehensible also in comparison to other optionals. You can write better if you understand the logic. Only 2-3 units are theoretical, but all are the very practical things that we learn or we see around us. जोटा हमें देखुचे जो सिस्टम टा जो गवर्नमेंट अंडर रे हमें शासित होचे बा वर्ल्ड ग्लोबल गवर्नमेंट चला सबू एवरीथिंग इज रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तेणु पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवोल्यूशन से गोटे क्वेश्चन से गोटे कॉन्सेप्ट अच्छी कि हाउ डिड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व एज ए स्पेशल सब्जेक्ट और ए स्पेशल डिसिप्लिन सेटा गोटे लॉजिक देखा दरकार कि केमिति क्रम विकास है आगु पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन was considered to be a part of political science. Still it is a part of political science, but it is now a different subject. Some universities are also providing courses, separate courses, post-graduation, graduation courses on public administration. It is very precise subject, deals with the execution part and certain theories. Chapter 1, 2, basic, unit 1, 2 are somewhat theoretical, but rest part of the things are very practical and very interesting. So in this video we will be learning about evolution of public administration as a special discipline. Okay. So before that, just let me tell you that there is a famous quote by Rousseau that no man has any natural authority over his fellow man. No man has natural authority over his fellow man. Means authority is not hereditary. Authority is given to you because of your capacity, of your ability. So you should not consider that your ability of authority is natural. So that means authority should be made by imposed upon others in a rational way. You cannot overuse your authority. So that is a control by limiting authority. That was माने जोटा कि रूसो कहते कि लिमिटिंग अथॉरिटी ऊपर स्ट्रेस देवा कथा नेचुरल अथॉरिटी नुह तेणु यहाँ समस्ते एडमिनिस्ट्रेटर हिसाब रे बा रूलर हिसाब रे यहाँ बुझा दरकार ठीक अच्छे ओके देन another quote about voting behavior also known as electoral behavior involves understanding the factors and reasons which influence voting patterns. ठीक है आरंभ करिबा public administration is a government in action कहा जाए all those things that related to implementation. What is more important? Why public administration is important? If I ask you what is more important, policy or its implementation? We may have policies, we may have ideal policies, ideal plans, ideal projects, but if jaddi seguriko implement nahanti, if they are not properly implemented, there is no use of written policy or drafting the policy. Is a written constitution essential for every country? Is written constitution is essential for realization of fundamental rights? खाली गोटे लिखित संविधान रहिले देश रे लोक माने मौलिक अधिकार पाइजिबे सेमती माने नहीं. For example, United Kingdom does not have a constitution.
Kintu its people are realizing fundamental there is little bit there is very fewer issues related to fundamental rights, but we have fundamental rights written, we have detailed description in our constitution, but there are several issues. Then policies are not important. What important is implementation, proper implementation, and implementation counts much. Sethipai public administration is important. Studying about public administration or studying about its different dimensions is very important. As a civil servant, you take it as an optional or not, but you will be always in the area of this subject. You will be dealing with this subject every time throughout your career. So better this optional therefore is ahead of others. So public administration is government in action. There are a lot of definitions, but it is a very good definition. It deals with the implementation of public policies and affairs of the government, management of public affairs. So dita jinsa gote hela implementation of policies. Public administration kon korchi implementation, au gote kono na management of public affairs. Policies are designed, no doubt. Management of public affairs. ये दुटा basic जिनस and that are very crucial. एटा crucial. जदि खाली policy implement हमरो dowry prohibition act अच्छी. Dowry prohibition act अच्छी थिले कौन हो? Dowry नहीं. जो माने implement करछन से माने अधिक dowry नउछन. Suppose you are going to implement it. You become an OS officer. तगड़ा dowry मागिबो सबले. तगड़ा dowry तुमको मिलिबो. तुमे नबो भी. भुवनेश्वर घर देव फादर इन लॉ कहे भुवनेश्वर घर दिहब कि गोटे भल प्लट दिहब गाड़ी दिहब इज नॉट इट डाउरी. सो बेसिक जिनस हूँ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स. तेणु खाली पॉलिसी लॉ रहिले जे कथाटा हम सेमती नहीं. इम्प्लीमेंटेशन भी गोटे बहुत बड़ एस्पेक्ट रहे. तेणु से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये जे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो इवोल्यूशन जे देखिबा इट ट्रेस्ड बैक टू ओनली 19th century. It was not a separate subject. The issue of public administration as a separate discipline came into existence in 1918, last part of 19th century. जोतरे कि तुम देखि परथिबो कि politics administration dichotomy कथा उठिला. वुड्रो विल्सन कारण public administration as a separate discipline emerged in United States of America. But here question arises कि public administration आगुर नथिला कि थिला. कौटिल्यर अर्थशास्त्र रे थिला, प्लाटो रो थिला एवं मैकियावेली रो प्रिंस रे भी डिस्क्रिप्शन है. Public administration has been a part since the idea of modern state came up. Since the idea of modern state came up, public administration emerged as a very vital subject because administering people, administering the nation and serving the people is very important. So policy making is not very difficult thing, but policy implementation is serious. So in this era, the first stage public administration, there was a debate, there was a perception that politics is not administration. Politics means that is policy making. Policy making is the domain of state. Policy making is the domain of the state. It is the domain of state. अर्थात state रा काम, सरकार रा काम है. Political executive करियो state. Political executive करियो सेटा. Political executive will implement, make the policies. But administration is implementing authority. It will implement. तमने there was a proposition that politics is not administration and administration is not politics. There should be no political interference. Then purpose kon thila? Purpose thila to ensure efficiency, professionalism and anonymity of the public servants. जोटा कि एबे भी किछि मात्रा रे हमें देखुचे. किंतु efficiency ऊपर गुरुत्व दियैतला. Administration should concentrate only on implementation, letter and spirit. Whatever policy is made, there should be no concern among the administrators. Rather, they should focus on proper implementation of the public policies made by the state. State is means political executive. They will make the policies. ସେମାନେ नीति निर्धारण करिवे एवं इम्प्लीमेंटेशन करिवे पॉलिटिक्स. एवं एई जो फेज रो प्रवक्ता किए थिले ना वुड्रो विल्सन
जोटा कि जी कि जो लेखारे कौन पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी विभाजन विषय कहते गुड नाउ जो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन बही रे से भी कहते कि पॉलिटिक्स इज नॉट administration, administration is not politics. That means politics should remain away from the political interference. Political interference किछ रहिबनी अर्थात एटा कौन सो वुड्रो विल्सन in 1887 the study of administration रे कहले एवं ये भी कहते that is first stage जो कि public administration emerged. The debate emerged whether it is a separate subject of study or not. Second stage जो देखिबा second stage principle of administration आसला एथिरे किछि प्रवक्ता माने कहिले कि जेमती वैज्ञानिक विश्लेषण अछि जेमती गोटे पद्धति गोटे एक्सपेरिमेंट हो कि गोटे प्रोडक्ट हो गोटे प्रॉपर प्रोसेस दे गति करूछि सेमती प्रशासन भी बा एडमिनिस्ट्रेशन भी गोटे प्रॉपर प्रिंसिपल दे गति करूछि ए समय माने कहले साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तेणु आर मेजर थिले हेनरी फेयल जी प्रवक्ता थिले से प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारा 14 प्रिंसिपल से कहते जमती हायरार्की है कि यूनिटी ऑफ कमांड है कि स्पान ऑफ कंट्रोल अर्थात हायरार्की माने कौन गोटे स्ट्रक्चर रहिबो कलेक्टर डेप्यूटी कलेक्टर बा जमती जहाँ रोचे हमर सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी जो लेवल रोचे से लेवल गुरा सब ये जो कहते हायरार्की कहते आ यूनिटी ऑफ कमांड केते जण जने अथॉरिटी अंडर के जण जने के जन को डायरेक्शन दे पारे स्पान ऑफ कंट्रोल अर्थात जने अथॉरिटी केते जण को कंट्रोल करि परिबो केते जण ता अंडर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स रहिबे तो एई सब नीति गुडिक आवश्यक बोली कुहा गला त माने इन दिस स्टेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज्ड as a science of administration as a science of administration बोली असले स्टेज रे प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एवं एथिरे एम्फासिस रहला कोन ना हायरार्की ऊपर एथरे रहला जे हायरार्की रहिबो हायरार्की ऊपर आ यूनिटी ऑफ कमांड ऊपर स्पान ऑफ कंट्रोल तो माने गोटे यूनिट ऑफ कमांड माने कोन गोटे लोक गोटे अथॉरिटी कथा मानिबो ए सबऑर्डिनेट शुड be abide by the order of one authority unit of command को गला span of control को आसला करे एवं जो span of control एवं ए समय मुख्य प्रवक्ता माने थिले हेनरी फेयल लथर गलिक लिंडल वरविक माने ए जो पोस्ट कर्व व्यू आर उटा अछि पढाबो तुम देखिबो पोस्ट कर्व जोटा एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऊपर से कहथिले कि एग्जीक्यूटिव एगुरा जो करिबो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग रिपोर्टिंग बजेटिंग एगुरा सब करिबो तो एगुरा हूँ एग्जीक्यूटिव फंक्शन कहते लिंडाल भी सेमती बहुत सारा प्रिंसिपल्स देते तेणु ये प्रिंसिपल उपर हेनरी फेयल गुरुत्व देते ये लुथर गुलिक फंक्शन उपर गुरुत्व देते एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेटर एवं लिंडाल और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उपर गुरुत्व देते सो ए समय गोटे सिस्टमैटिक स्टडी बोली कहगला इट वाज डिबेटेड दैट कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए साइंस इट इज ए साइंस ओके इज इट ए साइंस एग्जैक्टली No, it is not a science, it is something different. It has certain principles, no doubt, but it varies from state to state, from environment to environment, from sector to sector. It is not universal. Then era of challenge आसिला जोतरे कि जो प्रिंसिपल गुडा को चैलेंज करा गला जोटा कि era of challenge बेले एवं हर्बर्ट साइमन जोटा थिले से कहले principles are proverbs. Principles are proverbs. कहले एरा प्रोवर्ब गुरा आर किछि गोटे विचित्र आर किछि गुआ आर किछि ओरिजिनलिटी नाही प्रिंसिपल गुरा देयर कैन नॉट बी एनी प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट इज नॉट ए साइंस वेली कहला हार्वर्ड साइंस एरा ऑफ चैलेंज रे क्रिटिसाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स एज प्रोवर्ब्स एवं ही बेस्ड ऑन हिज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी साइंटिफिक एनालिसिस डिसीजन मेकिंग ऊपर ये कहले तेनु ए समय रे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो प्रिंसिपल गुडा को चैलेंज कराइतले एवं जो समय कि से को प्रोवर्ब बिली कुआ गला जोटा कि प्रोवर्ब कुआ गला एवं गोटे गोटे डाउट आसला कि आइडेंटिटी क्राइसिस आसला कि कौन एक्चुअली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये हबो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ऊपर रॉबर्ट डाल आर्ग्यूड दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज कल्चरली एंड सोशियली कंडीशनड तेणु एथिरे से माने कहले कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गोटे साइंस नो एवं सेतिरे खाली नुह कि खाली प्रिंसिपल गुरा अप्लाई कले हम से ह्यूमन बिहेवियर अच्छी कारण ह्यूमन जेहेतु कम कर
तार विभिन्न प्रकार बिहेवियरल चेंज हुए तेणु एडमिनिस्ट्रेशन इज सीजनड बा जोटा कहते आम कौन नर्चर्ड बाय ह्यूमन बिहेवियर तेणु मनुष्यर व्यवहारिक प्रभाव पड़े प्रशासन उपर तेणु खाली प्रिंसिपल रही डिसीजन मेकिंग बिहेवियरल अप्रोच उपर गुरुत्व दिगला तेणु मनीष ह्यूमन बींग्स को काउंट कला हर्बर्ट साइमन रॉबर्ट डाल एमान सब ए समय प्रवक्ता थिले एवं एटा को से प्रिंसिपल स्कूल जो स्कूल को चैलेंज कले तापर बिहेवियरल अप्रोच आसला अर्थात एटी जोटा हर्बर्ट साइमन मान जोटा बिहेवियरल अप्रोच उपर आरंभ करते ए समय एटा गुरुत्व दिगला ह्यूमन बिहेवियर मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोली कहगला जो कि कौन बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स उपर बेसी प्रेसर देले ऑर्गेनाइजेशन गोटे मनुष्य को नहीं गठन हो तेणु मनुष्यर मानसिक स्थिति मानसिक भाव एवं तार व्यवहार ही ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बा एडमिनिस्ट्रेशन को परिचालित करे तेणु तार मेंटालिटी जने करप्शन करूची तेणु करप्शन करिवार सिस्टम तो अच्छी करप्शन करा हबो नहीं बोली कि जने करप्शन करूची तार अर्थ कौन बिहेवियरल इम्पैक्टा बेसी पड़े से जो स्टेज को बिहेवियरल अप्रोच स्टेज कह जाए जो फोकस शिफ्टेड फ्रॉम स्ट्रक्चर टू ह्यूमन रिलेशन उपर बेसी गुरुत्व दिगला एवं ए समय तुम देखुच जे एडमिनिस्ट्रेशन वाज स्टडीड एज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस अर्थात से गोटे पार्ट बोली देखागला एवं चेस्टर बर्नार्ड अब्राहम मास्लो जार नीड हायरार्की थ्योरी गोटे अच्छी नीड्स केमती मनुष्यर नीड्सटा केमती कंट्रोल करिया दरकार आग जदि गोटे बेसिक नीड्स फुलफिल है से हायर नीड्स आड़ू केमी जाउची एवं केमती लास्ट पर्यंत सेल्फ आग्रांडाइजमेंट तापरे मान फेम नेम तेणु तार नीड्स अनलिमिटेड रोचे से अनुसार तार बिहेवियर भी इम्पैक्ट पकाए तेणु मैस्लोर मोटिवेशनल थ्योरी बा जो नीड हायरार्की इज वेरी इंपोर्टेंट इज स्टडीड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तेणु अब्राहम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी बोली से व्यवहार करते डुग्लास मार्क गर्गर थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई लीडरशिप एगुरा सब करते तेणु बिहेवियरल अप्रोच उपर बेसी प्रभाव पड़ता है ठीक अच्छे तापर आसला डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 1950 और 60 उपर आसवर कारण है जो वर्ल्ड वार द्वितीय विश्वयुद्ध पर जो माने क्षयक्षति होता तार पुनरुद्धार रिकन्स्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन निश्चित भाव में विनियोग रहा दरकार से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एरा बोली आम कहूचे जदियो यहाँ विभिन्न प्रकार पब्लिक पॉलिसी अप्रोच स्टेज बोली कहुए एठू एरार माने के जन 5टा स्टेज भी लिखि पारती किंतु एटा को आम सेपरेट करिछि कारण डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन थिला कि एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री एवं आर प्रवक्ता थिले जोटा आम देखुछ जे जो फ्रेडरिक्स जार प्रिज्मेटिक साला मॉडल बहुत अच्छी तेणु डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट भितर डिफरेंस अच्छी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन शुड फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट है डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेकानिज्म तेणु ये समय बेसी गुरुत्व दिगला डेवलपमेंट को मॉडर्नाइजेशन आउ कैपेसिटी बिल्डिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज आउ बेसिकली कंट्रीब्यूटर थे किए फ्रेडरिक्स F.W. रिक्स जोटा आम फ्रेड.W. रिक्स एवं तंकर प्रिज्मेटिक साला मॉडल बहुत मान डेवलपिंग कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन उपर से बहुत रिसर्च करते रिगिजियन मॉडल गोटे बहुत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल गोटे भल इंपोर्टेंट एरिया उपर पाठ पढ़ा जाए ठीक अच्छे तापर आसला न्यू पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन एथिरे 1968 और 70 समय न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आसला ये एथिरे कौन कराला ना से डेवलपमेंट तो हम किंतु सोशल इक्विटी को बेसी दिगला सामाजिक समानता सबु वर्गर लोकंकर समानता धीरे धीरे विकास द्वारा आरंभ है जो डेवलपमेंट आसीगला डेवलपमेंट एजेंट हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन काम कला से सोशल इक्विटी और रेस्पॉन्सिवनेस पर गुरुत्व दिगला जो कि ड्वाइट वुल्ड एतरा मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस इंपैक्ट पड़ी मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो कि ड्वाइट वाल्डो जोटा देखुच जी कि मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो अमेरिका रे होता तार प्रवक्ता थे कहगला कि प्रशासन खाली उन्नयनमूलक काम कले हेनी से समाजर समानता सामाजिक समानता भी सब वर्गर लोकंर केमती उन्नति हम सब वर्गर लोकंर केमती ये रही प्रशासन तत्पर हवा दरकार अर्थात उत्तर मान रेस्पॉन्सिव हवा दरकार तेणु न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने सोशल जस्टिस इक्विटी सिटीजन्स पार्टिसिपेशन उपर गुरुत्व दिगला
सोशल जस्टिस उपर गुरुत्व दिगला सिटीजन पार्टिसिपेशन उपर गुरुत्व दिगला सॉरी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन उपर जोटा देखुछ फ्रेडरिक्सन और ड्वाइट वर्ल्डो एमाने यहाँ करते यहाँ मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो होता 1968 रे तादरू यहाँ उद्भावित होता तापर आसला न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एथिरे देखागला कि जितेबाला न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एरा जितेबाला ब्यूरोक्रेसी को सबू जिनस दिगला सोशल जस्टिस इक्विटी आउ जोटा आम देखुचे कौन माने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन परे जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे कौन इक्विटी सिटीजन्स पार्टिसिपेशन सोशल जस्टिस दिगला सरकार बा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बा सिविल सर्वेंट सिविल सर्विस सबू करियो बेले ताकू दायित्व दिगला तो से देखागला कि बहुत सारा करप्शन होची लॉस है गवर्नमेंट बैंक माने गवर्नमेंट रेवेन्यू लॉस है एवं डेवलपमेंट एते त्वरान्वित हलानी एवं करप्शन बढ़ीगला हाई डिग्री ऑफ कारण ये समय बेसी करप्शन होची न्यू पब्लिक जो देखुच तुम पीरियडटा इंडिया रो तुम जो देखो ये समय मैसिव करप्शन होची कारण ये समय प्रशासन उपर किसी नियंत्रण नथिला से सबू काम करथिले एवं सबू स्कीम पॉलिसी निजे माने विनियोग करथिले सरकारी स्तर रे तांका हाथ रे सबू पावर थिला तेणु ये समय मैसिव करप्शन होची तेणु से जो फेल्योर है स्टेट रो फेल्योर है को मार्केट को अणागला प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेट करागला एवं एटी गवर्नेंस ब्रॉड है खाली सरकार नुह अन्य मानक भी पार्टिसिपेट से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हूँ कौन ना जो माने द मैनेजरियलिज्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर वाज अप्लाइड यही समय प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन ये सब कथा आसला कारण गवर्नमेंट इनएफिशिएंट बोली प्रमाणित है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बा सिविल सर्विस इनएफिशिएंट प्रमाणित है बहुत सारा लाकुना रहा बहुत सारा सिस्टेमिक प्रॉब्लम जात है करप्शन है तेणु से प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करागला जोटा पीपीपी मोड उपर ये करागला तेणु ये समय बेसिकली फोकस रही एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेटाइजेशन उपर बेसी गुरुत्व रहा परफॉर्मेंस मेजरमेंट समय आसला मार्केट को इन्वॉल्व करागला से ना हूँ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट तमाने मैनेजरियल मैनेजमेंट पॉलिसीज ऑफ प्राइवेट सेक्टर रो कौन प्राइवेट सेक्टर रो जो मैनेजमेंट पॉलिसी गुरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे इम्प्लाई करा एवं एफिशिएंसी आसिया पीपीपी मोड भी इस समय आसला तो बेसिकली मार्केट मेकानिज्म गला एवं गवर्नमेंट शुड स्टीयर बोली कहगला गवर्नमेंट केवल ड्राइव करिवो इट शुड नॉट रो तमाने मेनी प्लेयर्स केम सब गवर्नमेंट को साहाय्य करने प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करागला प्राइवेट सेक्टर बुझियो गवर्नमेंट केवल कंट्रोल करिवो तेणु ए रिड्यूस्ड रोल ऑफ द स्टेट आसीगला स्टेट रो रोल टाक रिड्यूस कर दिगला कारण मैसिव करप्शन जो है मैसिव ये है कि देशर किसी डेभलप है लफसाइडेड डेभलपमेंट है से प्रशासन को बा सरकार निजको कौन कला ना प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कला एवं पीपीपी मोड रे सब काम कराला प्राइवेटाइजेशन करागला लिबरलाइजेशन करागला किंतु गवर्नमेंट अल्टीमेट कंट्रोल अथॉरिटी हिसाब से काम कला तेणु रिड्यूस्ड रोल ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस जो कथाटा आम कहूचे सेटा एते समय बेसिकली तापर न्यू पब्लिक सर्विस कथाटा आसला डेनहार्ट और रॉबर्ट डेनहार्ट एमाने कहले कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खाली नुह कि लोकों को कौन करिवो माने रूल करिवनी सर्व करिवो तेणु पब्लिक सर्विस एरार जो न्यू पब्लिक सर्विस रे आसिला कौन ना सिटीजन्स आर priority of the administration. Citizens' satisfaction should be the priority of administration. Can unless citizens are satisfied, there will be no worth of administration. तो ये समय democratic governance, public interest को highlight कराला, citizen engagement को ये करागला विभिन्न मोड रे एवं ये समय सोशल ऑडिट वगैरह ये सब जो आमर मनरेगा है से सोशल ऑडिट करागला ग्राम सभा ये सब कॉन्सेप्ट गुरा धीरे धीरे पॉपुलराइज करागला एवं लोक मान को इन्वॉल्व करागला एवं जोटा आम कहूचे कौन पब्लिक सर्विस शुड सर्व सिटीजन्स नॉट मैनेज देम लाइक कस्टमर्स सी शुड सर्व सिटीजन्स शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एंड द सिटीजन्स इन पर्टिकुलर तेणु प्रति वर्गर लोकंर उन्नति ये सर्विस मेंटालिटी को रखा दरकार ये पैरेंटल पैट्रियार्कल माइंडसेट न रखिकी गोटे रूलिंग माइंडसेट न रखिकी सर्विंग माइंडसेट सब पब्लिक ये समय कहगला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड सर्व नॉट स्टीयर तेणु ये समय बेसिक कॉन्सेप्ट गुरा आसला जोटा कि तुम देखुच जेवी डेनहार्ट
और रॉबर्ट डेनहार्ट जो थिले से माने ए सब कथा पॉपुलराइज करथिले एवं सी एम्फासिस हला डेमोक्रेटिक गवर्नेंस पब्लिक इंटरेस्ट और सिटीजन एंगेजमेंट ऊपर हला okay and this is the era we are passing through citizens charter social audit ए समय सब बेसिक भाव में विकसित होउची ओके एवं एई मध्य कोन हला ना डिजिटल एरा आसीगला डिजिटल इंडिया कथाटा आसीगला माने टेक्नोलॉजी आसीगला जोटा कि टेक्नोलॉजी बिकेम ब्रॉड बेस्ड एवं देखा गला कि टेक्नोलॉजी प्रशासन को सहाय्य करि परिबा एवं फास्टर सर्विसेज जो ऑब्जेक्टिव रही हमर रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट इन नीड इज गवर्नमेंट इन डीड कहा जाए तेणु गवर्नमेंट जदि नीड समय केते समय केते कम समय टाइम बाउंड मैनर केम दे परुची एवं आउट कथा हला कोन ना जो मिडिल मैन रहउतले करप्शन होउतले सेटा को भी एनिहिलेट एलिमिनेट करिया पे चेष्टा कराला सो दैट पीपल एंड गवर्नमेंट शुड बी डायरेक्टली लिंक्ड एंड दे शुड गेट द बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली डीबीटी कंसेप्ट असला एंड इट बिकेम पॉसिबल ड्यू टू द in advent of technology or you can say artificial intelligence or internet so internet asila pare asigala digital era governance जोटा कि contemporary term रे चलछि एवं एटा पैट्रिक डैनलीवी ताको बहिटा मु देखुतिली पैट्रिक डैनलीवी रो जो थिला बेसिकली तांकर थिला डिजिटल एरा गवर्नेंस थ्योरी रो प्रवक्ता थिले से एवं हाउ डिजिटल माने digital infrastructure can help administration in building a durable and relationship between people and government. एसमरे e-governance, digital service, transparency and data driven decision making एगुरा सब emphasis दिया गला. This era is going on, so you can see that there was a lot of development took place in the public evolution of public administration as a separate subject. Still it is kind of passing through different stages and it is going to be emerged as a separate study. It is कहीं ना ये जो प्रशासन जो लोक प्रशासन बा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कथा कहूचे it is quite a dynamic subject तेणु से तार इवोल्यूशन धारा रे विभिन्न प्रकार आसिला कारण it is separate because it focus on the most important part of governance, that is implementation. So unless there is a strong public administration, but unless there is a strong civil service, responsive civil service, no policy can work well. So public administration is discussed as a separate subject and it needs to be a separate subject. So it already separate subject ro मान्यता पाई सारी यूपीएससी ओपीएससी रे गोटे ऑप्शनल पेपर अच्छी तेणु प्लान यहाँ बेसी इजी ऑप्शनल कहीं ए सब डायनामिज्म गुरा तुम पढ़ सेकेंड पेपरटा तो पूरा तुम पेपर 2 पेपरटा जोटा पॉलिटी गवर्नेंस पेपर अच्छी तेणु ओवरऑल तुमको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल 40 to 50% हेल्प करुच्ची पेपर कारण पेपर 1 रे जो अच्छी डिजास्टर मैनेजमेंट दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 तो पूरा कंप्लीटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड पेपरटा विथ लिटिल बिट वेरिएंस किंतु रिलेटेड पूरा तापरे पेपर 3 रे जो रहउची तुमरा इंटरनल सिक्योरिटी सेटा भी गोटे एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेपर 4 जो अच्छी एथिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स ये भी गोटे टाइप रो माने 40% हेल्प करूची तेणु गोटे subject which has overlap with multiple papers and also essay paper that is also being held by public administration optional. Then why not this optional is superior to others? So I think it is superior. Yes, एतरे केवल अंडरस्टैंडिंग रो दरकार परसेप्शन क्लैरिटी दरकार दीपद लिखिबा पई जो एबिलिटी से बुझिबार एबिलिटी दरकार जदि आम ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कले एतिक जिनस आम बुझीगले धर इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मु कहली जदि आम खाली एतिक जिनस बुझिकी लिखिदेवा भी सेटा बहुत काफी एनफ तेणु डोंट वरी इफ यू आर डिसाइडेड कि इफ यू आर थिंकिंग अबाउट चूजिंग ए ऑप्शनल इन सिविल सर्विस देन बेटर ऑप्ट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट विल हेल्प यू एवं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ADA is starting a batch online batch okay on public administration एवं जदि भी किसी धर तुम्हें ऑफलाइन किसी गाइडेंस चाहूथिबो तो यू कैन कांटेक्ट मी और एनी गाइडेंस रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल यू कैन कांटेक्ट मी ऑन
my phone number, like that is 93487982237. I repeat the number 93487982237 रे मते कांटेक्ट करिवो आमे कथा हबा ठीक अछि। तो डिसाइड करो एवं भलो भाबरे टिके पढ़ापढ़ी करो, डीप एनालिसिस करो। दिस इज ए वेरी माने कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एग्जामिनेशन। एथिरे बेसी परिश्रम करिबा अपेक्षा चिंतन शक्ति को उद्रेक करवा दरकार, सबू विषय आमको भाविया दरकार, जनरलाइज करिया दरकार, कंपेयर करिया दरकार, एनालिसिस करिया दरकार एवं सेटा ही आमको एग्जाम रे ट्रिकी आंसर लिखिबा बा एप्रोप्रिएट आंसर लिखिया पे एबल करिवो। एवं प्रतिदिन लेखा लेखी करो, मिनिमम गोटे पेज 2 पेज प्रतिदिन keep a hobby of writing anything on any issue and basing upon current relevant factors, that will help you. So सबले keep up writing, because if you continuously write something, you will develop a miraculous ability to crack. तेणु से सब राइटिंग उपरे फोकस कर, प्रति जिनस को लेख, प्रति जिनस को बुझिकी ताकू निज भाषा रे लेख, निजर जो इंग्लिश मीडियम बा ओडिया मीडियम जो थे भी दौच तो से लेख एवं तार भाइब्रांसीटा देख। जिते तुम कंटिन्यू कर लेखा से तुम फिल कर कि तुम लेखार जो क्वालिटी चेंज हो। तेणु परसिस्टेंट अप्रोच गोटे रख, तेणु सबू जिनस माने हो पार ठीक अच्छे। तो यही कथाटा माने विशेष इंपोर्टाट अच्छी। तेणु पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए यूजफुल ऑप्शनल, अ वेरी डिपेंडेबल ऑप्शनल कैन नॉट बी ओवर एम्फासाइज्ड. It is really a useful and optional ठीक अच्छे। So I will see you in the next class, but for the time being let me say you goodbye and wish you all the best for your endeavor here towards achieving your dream job or becoming a civil servant. God bless you all. Thank you very much for watching me.